Hello everyone, how are you? Now today we are moving to the next chapter, that is a poem of our textbook class 12th English, and that one is a thing of beautiful, a thing of beauty, a thing of beauty. That is a poem of a thing of beauty which was written by the John Katie. Very beautiful poem which was related to the nature. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। अबाउट द पोएट क्या है? पोएट जो कि जॉन केटी है बर्न हुए थे 1795 में और 1821 में इनका डेथ हो गया था। ये एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे, ठीक। और इन्होंने बहुत ही पोएम लिखा है। अब बात करते हैं वर्ड मीनिंग की, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ वर्ड मीनिंग है जिसे आप लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस स्टोरी को समझने के लिए। उसके बाद स्टार्ट करते हैं इसकी समरी। तो सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन पे। पोएम का इंट्रोडक्शन क्या है? ये पोएम जॉन केटी ने नेचर से रिलेट करके लिखा हुआ है कि और नेचर का ब्यूटी जो है वो हमें बता रहे हैं, ठीक। इस पोएम में तो मैंने स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन किया है, तो आप यहाँ से स्टेंजा वाइज एक्सप्लेन कर लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि आपको पोएम अच्छी समझ में आए, इसलिए मैंने इसे किया है। वीडियो को पॉज कीजिए, जाइए और इस एक्सप्लेनेशन को आराम से पढ़िए। स्टेंजा टू का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, उसके बाद स्टेंजा 3 का है और फिर उसके बाद 4 का है स्टेंजा एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं इसकी पोएटिक डिवाइस के बारे में। पोएटिक डिवाइस क्या क्या है इसमें? मेटाफोर क्या होता है? इट इज़ सेम लाइक एज सिमिली बट हेयर वी यूजिंग विदाउट यूजिंग so if as like etc we compare anything without using if as like, okay. For example, a barrow quite for us raising a flowery band. That is the comparison between two things without using the so for as like etc. And next is our insertment. Insertment is that if we move to the next line without using any punctuation. For example, whatever written here, a thing of beauty is a joy forever is loneliness increases, it will never pass it into nothingness. That here I can move to the next line without using any punctuation, comma, anything, etc. And next is our anaphor. What is anaphor? If two sentences start with the same word, that is the anaphor. Now next is antithesis. What is antithesis? If the two opposite words come in a same sentence, here using the antithesis. Now last one is the imaginary. What is imaginary? Imaginary, when we say any word and we can imagine, if we can imagine any word after hearing any sound, after hearing any words, we have got to imagine. That is the imaginary poetic device. Now next is our alliteration. What is alliteration? Alliteration is the repetition of consonant word. What is alliteration? Repetition of consonant letter in a word. And now our rhyme scheme is A A B B C C. We have seen in poem after before completing this one, we can read this poem and we can also see what are the rhymes was used in a poem. Now last one is our question answer. Mention in four things of beauty that aid join to our life. What are the 4 things? Simple, that is the sun, the moon, daffodil, reels, etc. Whatever the given in a poem, you can pick up from there also. What does a thing of beauty do for us? Simple. What does a thing of beauty do for us? A thing of beauty give a internal and elastic happiness and leave a indelible impression on our mind that we are able to relive wonderful feeling we get from each time we think about it. That is simply you can
correlate with your poem and write the answer in this manner. Now, how does you think a beauty provides shelter and comfort? Think a beauty, how it give a shelter? It is likely about a palace under the shade of the tree where we can rest, keep the sleep full. ये हमें कैसे ब्यूटी जो है हमें कैसे प्रोवाइड करती है शेल्टर और कंफर्ट? सिंपली हमें शेड देती है, छाया देती है पेड़ों की, अच्छी नींद स्लीप देती है, एक पीस देती है. दैट इज़ अ शेल्टर एंड कंफर्ट फॉर मी. एंड नाउ व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम आई थिंक अ ब्यूटी? इसका पोएम का मैसेज क्या है? आई थिंक अ ब्यूटी गिव अ मैसेज never diminished or fade. We can choose to see beauty is the most simple and common thing around, but this beauty become a source of unending joy for us. ये क्या देती है कि जो ब्यूटी है कभी ख़त्म नहीं होने वाली, हमेशा क्या है हमें जॉय देती है कि दैट इज़ आवर पोएम. इफ़ इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक. अरे यार एक लाइक तो कर दो और सब्सक्राइब कर दो, उससे क्या होता है आपका कुछ नहीं होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी, हम और वीडियो बनाएंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. ओके, थैंक यू फॉर